तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल. Okay, good morning, sir. Good morning, everyone. Those who have volunteered, please raise your hand. Okay, Aditya Shinde, you can start. Yes, sir. So recently I had been for SSC Tech 62 SSB, wherein I was conferenced out. Let us you answer my queries, then we will take your question, this thing or points also to get Right. greater clarity. This was your which number attempt? So this was my 13th attempt and 9th conference. 9th conference. And this was your conference after how much time having been spent with us? So I am with you from March of 23. From that I have been to two SSBs, both were conference, and then third one this was. So total 3. Very fine. So now tell me in concrete terms, what all improvements have you made in yourself so far? So improvement, first is I have started reading more. So, and then as discussed with you, daily routine, I'm following it to the best of my abilities. Also, I have to tweak it sometimes because of work and all, but I try to maintain it to the best of my abilities. And that only I told in this SSB also. And other than that, daily current affairs and all. These things I'm working on. I have not still got the answer. In concrete terms, what all improvements have taken place? We start from things like I talk of 4 aspects. What are the 4 aspects I keep talking about? So, communication, physical fitness, Hmm. and reading, current affairs. Okay. See, the 4 things which I keep talking about, one is your communication skills, absolutely right. The second thing I keep talking about is your knowledge of your core subjects. In your case, probably you'd be a working professional. For how long have you been working? So around about 2 years. 2 years. So for you, core subjects gets replaced by job knowledge. Fine. That's it. Then comes your general knowledge, and last comes your physical fitness. So in these things, you did not give me any concrete answer. You said ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. Concrete improvement हुआ क्या? Physical fitness में क्या improvement है? GK में क्या improvement है? कहाँ का क्या improvement है? बताओ. So GK में there is improvement. फिजिकल फिटनेस सबसे पहले पूछा क्या इंप्रूवमेंट है, बिकॉज इट्स वेरी मेजरेबल थिंग, वी कम टू नो क्या हो रहा है. अगर इसमें नहीं है तो पता चलता है आदमी का कि कहानी सुना रहा है, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं किया. Right, sir. So क्या किया इंप्रूवमेंट? हाँ, तो फिजिकल फिटनेस में डेली जो एक्सरसाइज जितना. फिजिकल फिटनेस में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है कोई भाई साहब आपका? तो मार्जिनली. मार्जिनल मींस जीरो एक्चुअली, इजंट इट ट्रू? नो सर, मतलब आपने वेट लॉस करने को बोला था. देखो यार, हिंदुस्तानी आदमी की डिफॉल्ट सेटिंग होती है झूठ बोलना. इज इट अ फैक्ट और नॉट? यस सर. है ना, वो तो तुम भी जानते हो ना. तो तुमने कहा मार्जिनल इंप्रूवमेंट, इसका मतलब जीरो इंप्रूवमेंट है मेरे हिसाब से. इफ आई गो बाय द लॉजिक ऑफ व्हाट हिंदुस्तानी नॉर्मली डू. किया है कुछ दौड़ में, पुशअप पुलअप्स में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है? एक पुलअप में इंप्रूवमेंट हुआ है तुम्हारा जब से आए हो? हाँ यस सर, वो हुआ है. कितना? सर पुलअप्स अभी अराउंड 20 कर लेता हूँ. एंड 20? पुशअप्स. यस सर. पुलअप्स मतलब वो. यस हाँ, सर. एंड पुशअप्स 50. 50 देन गुड. एंड रनिंग का कितना है? 5 किलोमीटर कितना टाइम है आपका? ऐसा नहीं सर, रनिंग नहीं होता है. रनिंग ऐसे ही नहीं. नो सर, रनिंग नहीं. मैंने कहा था कि रनिंग करनी नहीं है. यस सर, कहा था. मैंने कहा था रनिंग करो ही मत. Did I say you should run or did I say you should not run only? No, you said that you should run. तो आपने कहा ठीक है, नेहरू कहता रहता है, मैं अपने हिसाब से चलाना है. फाइन. तो आपने रनिंग नहीं की कोई भी. ओके फाइन.
Still I would say your physical fitness is not bad. Height कितनी है आपकी? So height is 5'10". 5'10". और weight कितना है? It is around 76. 76। तो weight थोड़ा ज्यादा है आपका। Right, sir. आपका करीब 6-7 किलो ज्यादा है। तो Yes, रनिंग sir. वगैरह की होती, that would have been good for you. See, also please understand, Aditya, it also shows your attitude. Mhm. Your attitude कि ठीक है, चलता है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। Fine. You got to change this attitude. Fine. अच्छा, अभी आते हैं तो आपका आई टेक इट दैट योर इम्प्रूवमेंट ओवरऑल ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट आपने रेगुलर किया है? Yes, sir. मतलब रेगुलर हुआ है, ये कभी 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 this किया है? तो कभी कभी ये वाले में कभी कभी किया है, एंड अदर देन दिस किया है। कर रहे हो? फाइन। So fine. So I take it that overall your improvements are nothing very significant. Maybe GK something. Let us now go over the things. Now we come to the. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Let us come to the screening process. Any problems in that? No, sir, screening was not a problem. Not at all. Okay, fine. Let us come to the psychology test. In that, how many situations could you react to? So 47. 47. That's an acceptable number. I say that 45 you must do. So you've gone above that. So that's an acceptable number. I presume balance other things you were able to complete in the psychology test. Yes, sir. Words all I completed, and stories also I did it, and Very, SD also I completed. very fine. SD had been approved by me. Yes, sir. Okay. Now, had I given you some serious observations when I discussed your psychology test responses? No, sir. Serious observations you had not given. नहीं You था. said that it is fine. So you are practically on the right lines, and little bit tips you would have got from me. And Right. balance, I presume you read the book and all the things given there. Yes, sir. You read and grasped the things. Okay. So, as per you, any issues in the psychology test? Sorry, sir. Your voice was. As per you, were there any issues in the psychology test? No, sir. As per me, there were no issues in psychological test. Fine. One It or was two fine. stories you obviously feel कि बाद में that you could have written it better or that, but other than that. Just hold on. क्या स्टोरीज में बेटर क्या लिख सकते थे आप? ये कहाँ से आइडिया आया आपको? क्या बेटर हो सकता था? मतलब बाद में जब आफ्टर द SSB वहीं पे ना I I have wrote then. understood, but now I want this clarification from you कि क्या बेटर कर सकते थे स्टोरीज में, बताओ तो सही मुझे, क्योंकि अगली बार आप करोगे तो मुझे पता तो चले क्या बेटर करने वाले थे आप, या क्या बेटर करने का इरादा है आपका, बताओ। like जैसे कि देयर वाज एक पिक्चर था कि मैन इन, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक आदमी पानी में है एंड एक पर्सन था रोप के साथ, एक सो एंड टाइड्स वेर प्रिटी हाई। तो फिर उसमें आई हैड रिटन कि दैट पर्सन ही वाज फिशरमैन एंड देन ही सेव्ड हिम, बट देन बाद में मुझे जाके ऐसे लगा कि इतने जब हाई टाइड्स है तब कौन फिशरमैन फिशिंग करने जाता। सो दिस देखो, एक ही ऐसा पॉइंट मेरे वो दिमाग में आया। आदमी किनारे पे खड़ा हुआ था रस्सी लेके, तो उसने रस्सी फेंक कर उसको पुल करके हेल्प किया, यही तो थी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज। यस सर। तो आई देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस इन दैट। फिशरमैन हो सकता है, कोई भी XYZ भी हो सकता था, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके फाइन। तो ये जो आप फाइनर पॉइंट लगाने की सोच रहे हो, इसमें कोई दम नहीं है। ओके फाइन। अरे सर।
So this person could be anybody. So then this जो improvement आप सोच रहे हो, this is neither is going to be an improvement nor is it warranted. Mhm. Fine. Yes, sir. What else improvements you are thinking of doing? So यही कि मतलब बस एक नहीं, आप डर गए हो, आप डर भी जाते हो ना मेरे से, नो नो बात सर, ऐसा नहीं। बताते नहीं हो ओपनली। नहीं नहीं सर, इतने अगर डांट पड़नी शुरू हुई है तब शुरू होगी और पड़ेगी। नो सर, हाँ, बताओ क्या नहीं, क्या इंप्रूवमेंट करने वाले थे और आप? ये why I get concerned about these things is कि हो सकता है आप बेवकूफियां बढ़ाओ इम्प्रूव करने के बजाय। क्या आइडिया था और बताओ मुझे। यू हैव टू गो फॉर एसएसबी नॉट आई। यस सर। सर एक स्टोरी मतलब आई हैव रिटन इट वंस अगेन, तो मैं आपको एक स्टोरी वो पढ़ के सुनाऊं क्या? पिक्चर बता और स्टोरी पढ़ दे, बता। हाँ यस सर, ऐसा था कि वर्कर्स लाइंग इन शेड एंड मैनेजर स्टैंडिंग, मतलब ट्री के नीचे कुछ ठीक, वर्कर्स लेटे हुए थे। ठीक तो है। उसमें स्टोरी आई had written कि it was a hot and dry afternoon when Rahul, the manager of road construction site, came to see his workers who were lying after lunch. Rahul inquired about the food, if they get paid on time, and also inquired about well-being of their families. The sympathetic behavior of Rahul was appreciated by them, and they worked hard under Rahul's supervision, which led to on-time completion of the project. So, कोई ऐसा इशू नहीं है स्टोरी में, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई वुड ओनली से इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, देन इन मोस्ट केसेस दैट ये रोड छोड़ के कंस्ट्रक्शन वाले लेबर जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड लेबर्स ऑफ ये आपका L&T और ये अदानी पदानी जो ये रोड कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, यू थिंक दे हैव परमानेंट पेड लेबर्स जिनका ये mm, मेडिकल क्लेम और ESI और इंश्योरेंस सब रखते हैं? बुलशिट दे डू। no. जनरली कॉन्ट्रैक्टेड लेबर। तो अगर आपने लेबर की बात करनी थी तो तुम आप उसकी लेबर की बात करते जो कि मतलब परमानेंट एम्प्लॉय Permanent labor. फैक्ट्री फैक्ट्री वाले वगैरह वाले हैं। Hmm. बट ऑल सेड एंड डन, आदित्य, these are minor observations which a young boy like you need not know. It doesn't make much of a serious difference. कोई इशू नहीं है। Okay, sir. तुम क्या इंप्रूवमेंट सोच रहे थे स्टोरी में करने का? तो यही कि मतलब ये स्टोरी पढ़ के ना, मतलब ठीक, मतलब जैसे आपने बोला कि इट लुक्स फाइन, बट ये बहुत अच्छी ऐसे नहीं लग रही। नहीं, देखो क्या है, आपने यू सी थिंग, यू हैव शोन दैट दिस मैनेजर was concerned about the welfare aspects of the employees, which is a cause of concern for a manager. The manager has to get the work done on time. That's the highest priority thing. But taking care of the welfare of the people is also a task, and which also indirectly affects their efficiency, their level of satisfaction, and they perform well. एम्प्लॉय रिटेंटिविटी एंड ऑल दोस थिंग। तो कोई गलत काम नहीं है। आपने ये इशू की बात की, नो, आई फाइंड नथिंग रॉन्ग इन द स्टोरी। ओके, ठीक है, ये स्टोरी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सो गेटिंग द देन फिर पॉइंट? सर साइक इज ऑन द राइट लाइंस, आई वुड से। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो, व्हाई आई आस्क्ड यू दीस थिंग्स, क्या होता है आदित्य, पर्टिकुलरली व्हेन अ पर्सन लाइक यू हैज फेस्ड failure several times and who also knows that he is more or less there, कोई खास ऐसा इशू भी नहीं है, then what happens, there is a tendency to try and find out things which are wrong, which actually may not be, and you lose self belief and all that. I don't want that to happen in your case, beta. There's nothing wrong with these stories, they're okay. Take one issue, resolve it, and that's it. You followed that principle, so there's no problem in that. Fine, better. यस सर। Now let us come to the cheat your task. In that,
in the group planning exercise, could you write the complete plan? Yes, sir. I could write the complete plan. Did the group nominate you to narrate the common plan? Yes, sir. They did. They did. And you narrated to the satisfaction of the group members? Yes, sir. I narrated. No, people were satisfied with the plan that you Yes, sir. narrated. They were satisfied. After the Right. task, also when we went back to the rooms, I asked them, and they were satisfied. Good. Very fine. How many candidates called you to assist in the command task when they became commanders? So two of them called me. Fine. And what was the degree of difficulty of the command task allotted to you? So it was difficult, and Fine. That's good enough. I don't need any information. If I need, I'll ask. Did the GTO increase the degree of difficulty while you were doing it? yes, sir. He did. And you could still solve it? Yes, sir. Very good. First class. So no issues there. How many individual obstacles were you able to do? I did all 10. All 10. No repetition? No, sir. So this time, na, it was quite different. The GTO, this time, for the first time, it happened that he mentioned that you have to do it sequentially. Acha. After one, you have to go to two. So like that, I did Okay. 10. Okay. Fine. Yes, This is very surprising that the GTO is saying that you do in a sequential yes, sir. manner. That is why, na, while in briefing also, I clarified it again with him. Then he Okay, told that, fine. yes, what I told you. Okay, very fine. Any other issues in the GTO which you would like to bring to my notice? No, sir. GTO, I think it was very good. So that means all GDs, PGT, HGT, FGT, group obstacles, everything was quite fine. Yes, sir. Okay, very fine. And group people keep talking, ye recommend ho jayega, like that. So what was the view? They thought that I will get recommended. Anyone else what they were expecting? Anyone else? So मुझे लगा था कि और एक दो लोग थे from my group, they will get recommended, and वो हो भी गए, and they were वो हो भी expecting, गए? and they were expecting कि मैं हो जाऊंगा, and because of that, one of them who got recommended, ना, he only proposed my name for nominating for GPE, because he Oh, thought that in discussion मुझे लगा कि तू सबको लेके चल रहा है. okay, fine. So, in the group's rating, you were supposed to be, you were the highest expected chap to be getting recommended. Yes, I would say that. Okay, you can say that. That's very, very positive. Okay, good. Very fine. Now, in interview, tell me if you experience any issues. Sir, in interview ना, मुझे ऐसे लगा कि interview was जैसे हर वक्त होता है ना कि it did not cover all the aspects of it, because of which ना the questions that should have been asked in interview ये conference में पूछे गए थे, and conference also went for around 15-20 minutes. Like Let us not mix up the things. We'll come to conference. okay. So, in interview, okay, whatever was asked, you could answer well. Yes sir, I could answer well. In fact, in जो technical knowledge there होता were है ना no issues at all. Issues ना, yes sir, एक था कि he asked me about my biggest fear, so at that time I told that unknowingly hurting others वगैरह जो पता ही नहीं है उसके बारे में, which is not in my control, this thing. And एक और thing, yes, 3 things you're better than your friend, and 3 things he is better than you. उसमें one point ना he tried to थोड़ा सा trap me, so I then clearly told him कि this is what I said. क्या ट्रैप कुछ नहीं होता है यार, क्या ट्रैप करेंगे Trap यार, मतलब उसमें माउस he ट्रैप tried लगा to के cross बैठे question हैं. कि not trap but cross question कि ये अभी तो तुमने ये बोला था, now you're telling this. So then I told कि ऐसे ऐसे मैंने बोला था, and that is. I hope you are clear, honest and transparent. You are not trying to manipulate anything. No sir, I was not.
You were honest and straight. There were no issues. Yes, sir. So one thing was that कि एक question ऐसा था कि if I asked you to organize a trek from Pune to Srinagar, what would you do? So because मैंने बोला कि अभी recently with a group I have started going. तो फिर मैंने उसमें बोला कि there is one person who organizes it and उसने course वगैरह भी किया and he has a lot of experience. So I would like the best person who is equipped to do. He should do it. He should do the task. So ये मेरा आंसर था. So what about this? You think? नहीं तो बात तो ठीक है, पर अगर यू सी थिंग इज दैट इफ ही वुड हैव आस्क्ड यू कि तुम क्या क्या करोगे तो तुम बता देते कि मैं ये करूंगा, पता तो तुम्हें भी है ही. ऑफ कोर्स योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड. द बेस्ट जॉब शुड डू. ठीक है ना. अब मैं अगर ऑफिस का मैच खेल रहा हूं और मेरे ऑफिस में रोहित शर्मा काम करने आ जाए तो मैं क्रिकेट का मैच में उसी को कहूंगा, भाई तू देख, तू तो हिंदुस्तान का कप्तान है. ठीक है ना. अब उसमें हम अपनी दादागिरी थोड़ी चलाएंगे फिर. दैट पॉइंट ऑफ योर्स इज वेरी वैलिड. Absolutely sensible. If he was keen to know from you, he would have asked you. Did he ask you or he did not? No, no, he did not. So After there's that, no it is. problem. He would have understood कि तू कर लेगा यार. There's no issues. Anything else? No, sir. Other, I was able to answer to my satisfaction. Okay. So, what I can make out, Aditya, I have not been able to identify any problematic area. सब मामला ठीक ठाक है. अभी कब है SSB? 26th of February. Just remain focused. थोड़ा अपना रनिंग वगैरह भी सुधार लो. Strength wise, you're quite good. Keep up your GK and go like an absolute fresher this time. अरे नोट करने की जरूरत नहीं है. मोटी बातें आदित्य भाई जिंदगी की दिमाग में नोट की जाती हैं, पेन पेपर पे नहीं. ठीक है. समझ गया. Go like an absolute fresher. Recollect the same things which I keep telling. Don't try to impress anyone. In all the GTO series, be a good team member. Things will work out. तेरे जो ग्रुप वालों का असेसमेंट तेरे बारे में था वो गलत नहीं था. Do not try to look for कि कहाँ ब्लंडर हो गया. कोई ब्लंडर नहीं हो. Sometimes errors do take place in judgment. Just leave it at that. Fine. Forget about it. Things will work out. Yes, sir. ठीक है ना. अपना काम अच्छे से करते रहो. डेली लाइफ में रेगुलर रहो. That will enhance your confidence to take on the things. Getting selected in SSB is not a big deal and you are fairly competent enough to get selected. तो बात बन जानी चाहिए. अभी बताओ कोई और सवाल रह गए हो? No, sir. Sir, but this time ना जो कॉन्फ्रेंस थी ना उसका वेट टाइम भी लंबा चला एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा चला कि कॉन्फ्रेंस भी इट वेंट अराउंड 15 मिनट्स. मतलब काफी कुछ सवाल पूछे गए. क्या उन्होंने क्या सिचुएशन पोज की आपको कॉन्फ्रेंस में? नो सर, सिचुएशंस नहीं दिए थे उसमें. अबाउट इम्प्रूवमेंट ही आस्क्ड मी ना. सो उसमें व्हेन आई टोल्ड हिम अबाउट रीडिंग देन ही टोल्ड मी कि टेल मी पास्ट लास्ट 1 year में व्हाट ऑल बुक्स यू हैव रेड. सो उसमें व्हेन आई वाज इन्वेस्टिंग द बुक ना, वन बुक ही केम ऑन, वो मिलिट्री बुक थी ऑफ जनरल ढिलन. तो उसके ऊपर ही आस्क्ड मी कि क्वेश्चंस. तो दैट आई टोल्ड हिम एंड देन. ये अगर आप गोली दे रहे होते तो आप फंसते. आप जेन्युइन थे तो कोई इशू नहीं है. आई मीन वो कोलैबोरेशन, दोस क्वेश्चंस डोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. देन सर उसमें ना ऐसा था कि एसएसबी में फ्रेंड्स वगैरह कैसे बनाइए वो पूछा. एंड देन उसमें भी अगेन ही आस्क्ड मी अबाउट रूटीन. एंड देन अबाउट, हाँ, वन ही आस्क्ड मी अबाउट टेक्निकल नॉलेज की ट्रक और कार के इंजन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस. एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड आर्मी. तो व्हाई डू यू वांट टू लीव दैट एंड कम हियर. एंड देन फिर तो वो फैसिलिटीज ऑफ दिस एसएसबी एंड ऑल एंड फ्यूचर करियर ऑप्शन वगैरह एंड बेनिफिट्स ऑफ जॉब इन एसएसबी ये क्या है. What the salary you're getting? Sir, it is now around 35,000 per month. Probably they had a slight doubt as to whether you are motivated enough to join defense forces. Fine. It's not a big deal. You are attempting SSB. That's enough evidence that you are motivated. That's why you're going.
Right, sir. ठीक, तुम अपना ये काम करो जो मैंने बताया, डोंट गेट बॉदर्ड, थोड़ा सा हाफ आ गियर अप करो बस, दैट्स ऑल, नथिंग मोर, नॉट इवन वन गियर अप इज रिक्वायर्ड, हाफ गियर अप रखो, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, थिंग्स विल वर्क आउट, ठीक है? Yes, sir.